ये एपिसोड मेरे बबली बुबली बिब्लियोफाइल के लिए है। तो जिनको भी किताबें पढ़ने का बड़ा शौक़ है, ये उनके लिए है। आप स्किप कर सकते हो चाहे तो, बिकॉज़ ये छोटा सा बुक रिव्यू है, कुछ है नहीं। मैं बस अब हर रोज़ तो मैं कुछ कंटेंट डालूँगी नहीं ऐसा सीरियस वाला, तो कभी एक आधा एपिसोड ऐसा भी निकाल लूँगी। I still want, like, I want to talk more about, what kind of article Vogue pushed out, and like how shit that was, and like Vogue India, and just how shit was that, and more opinion pieces. That'll come with time. जो भी अभी pop culture में हो रहा है या मेरे life में हो रहा है उसके बारे में बात करते हैं. So I first came across this book on Instagram reel, and the reel turns out was the author herself itself, and it had a lot of interaction over it, like a lot of views, like likes, shares, comments, reposts, saves. And then the more I saw, the more I wanted it. But obviously baat hai, the more real I saw about this specific book, I wanted it. This year I've made it a point to read more Indian authors. I hope I don't regret this decision. Decision. Like, आई डोंट थिंक, मेरे को जेन्युइनली लगता है इंडियन ऑथर्स रोम कॉम कर ही नहीं सकते अच्छा. आई डोंट नो व्हाट इट इज़. लाइक कुछ ही ऐसे वो है, मजे हुए खिलाड़ी है, गीतांजलि श्री हो गई, या चित्रा बैनर्जी, दिवाकर उनिया, किरण देसाई. दे मेक सच एपिक सागा भी नहीं, एपिक पीस ऑफ literature. Those are like not rom-coms. Like there's nobody like Elsie Silver या Emily Henry जो अच्छा लिख रही है, अच्छा rom-com या अच्छा रोमांस बुक लिख रही है with थोड़ा सा adult spicy content. Like just give us something यार, इंडियन ऑथर्स यार, कुछ साउथ एशियन ऑथर, कुछ तो करो यार, कुछ तो करो. Anyways, as someone who actually is in the system of arranged marriage, I was excited to pick up this book, only soon to realize how bad it was. I mean, where do I begin? Book का नाम है Red Flags and Rishtas, and let's talk about it. Number one, the writing is so subpar, bhai sahab. You can, like, I wish I was drunk when I was reading it, and I wish I was double drunk while I'm reviewing this. You can finish this book in under 2 hours if you are an avid reader. Also, if you are an avid reader, that means you've read a lot of books. So I would say avoid this book in the first place. Of course, avoid it. Also, I don't get it, अगर आपका ये पहला बुक है, डेब्यू है, तो आप 350 रुपये की बुक क्यों बेचोगे? एनी बुक जो 150 रुपये से ज़्यादा है मैं खरीदती नहीं हूँ. सो ऑफकोर्स आई गॉट अ फर्स्ट कॉपी. लाइक दीज ऑथर्स कीप एनकरेजिंग, पर आप अच्छा तो लिखो तो हम बाय करेंगे. लाइक आई डोंट माइंड गोइंग बैक एंड बाइंग एन ओरिजिनल कॉपी फ्रॉम प्रॉपर लाइक authorized bookstores, but like if the book is good enough I'll do it. But if the book is this bad, you don't want to spend 350 rupees. Imagine what your life will end up looking like, especially if you're an avid reader. That means you end up reading 40, 50, 70 books a year, and if the book is this bad you would end up regretting it, and you don't even have that kind of money in the first place. So like, what the fuck are these authors asking us to do? Like, अच्छा लिखो, हम बाय करेंगे. लाइक वाई द फक डू पीपल बाय अरुंधति रॉय की बुक्स या किरण देसाई की बुक्स ओरिजिनल कॉपीज? वाई डू दे डू इट? लाइक इट्स बिकॉज दे आर पुलित्जर प्राइज विनर एंड बुकर प्राइज विनर. अच्छा लिखते हैं तो अच्छा, कोवेनेंट एब्राहम वर्गीस, कोवेनेंट ऑफ वाटर, अच्छा लिखो तो हम बाय कर लेंगे ओरिजिनल कॉपी. उसमें क्या है? ओरिजिनल में क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अच्छा लिखो. I was so angry when I saw that the books are that expensive. Like if you are a debut author, पहला बुक लेकर रहे हो, 100 से 150 के बीच में होनी चाहिए कॉपी का प्राइस, एंड दैट्स दैट. एंड ज़्यादा लिखो ना, 3-4 बुक लिखो, एंड कम प्राइस रहे तो ज़्यादा लोग खरीदेंगे. प्रॉफिट तो होना ही, ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट नहीं होना है. I know it takes a lot of freaking time for authors to write a book. साल, 1.5 साल, 2 साल लग जाता है, and that is why probably they charge that much. But कोई रिनाउन, कोई ऐसा खास नहीं लिख रहे हो, आपके पास MFA भी नहीं है या कुछ ऐसा मास्टर्स डिग्री भी नहीं है राइटिंग में कि आप इतना अच्छा लिख रहे हो. लाइक जस्ट बकवास, माय गॉड, बकवास, इतना बकवास.
And that is why probably why I stopped reading Indian authors ke book, but I'm trying to like add more to it, add more to this year. So yeah, okay, writing was subpar, feel free to avoid the book or just ask chat gpt कि भाई क्या है कॉन्टेक्स्ट ये बुक का, एंड इट विल लेट यू नो कि भाई ये है बुक में, ख़त्म, गेम ओवर, बात फिनिश. Number 2, I'm going to get a lot of hate for not liking this book, but where was the romance? This book keeps promising romance. मेरा बोलना है किधर था वो, emails में था, वो meeting rooms में था. This was more about their job and what they do in those meetings and those companies than about them as humans. There was no character growth, no background story. Who is Ananya? How is she on 200 plus dates and still haven't been able to find anyone? If so, does she need therapy? Because I've been in her situation personally and it's definitely my problem, not the guy's problem. Character depth ही नहीं है. कोई समझो ये बात को कि भाई कैरेक्टर डेप्थ, कैरेक्टर स्टडी कुछ नहीं है. हाउ डिड शी बिकम दिस वर्जन ऑफ हर सेल्फ, अ सीरियल मैन डेटर? हाउ डिड शी बिकम दिस वर्जन ऑफ हर सेल्फ? Another claim to break is this book considers itself to be a rom-com. Rom में com भी add है. There is no comedy. Not a single page had a comedic line to laugh. I vividly remember reading Project Hail Mary and freaking laughing my ass off. Like, it was that funny. I was laughing my ass off about what certain thing had to say and certain person had to say. I'm just yeah, it was funny. But this, I could not remember. There was no comedic line to laugh out on. There's no irony. There's just plain simple words. I think this book was written with a sole point of it being acquired by some big production house to be turned into a movie starring Varun Dhawan or Siddharth Malhotra, and that fucking sucks. That just fucking sucks. I wanted more. I honestly wanted more from the author. There was one, major secret that was revealed in, second half or 2/3 way through the book, as to why our hero, MMC, male main character, is the way he is by his brother. उसके भाई ने एक major secret reveal कर दिया. That wasn't the brother's place to share that secret with our heroine. I was so angry when I saw कि भाई, when I read कि भाई उसके भाई ने सीक्रेट रिवील कर दिया कि वो ऐसा सीरियस क्यों है और ऐसा क्यों है. भाई तेरा ये नहीं है प्लेस. ऑल्सो मेरे को तो शक ही हो जाए, डाउट ही हो जाए. स्टोरी लाइन इतनी सिंपल थी. शी वेंट आउट ऑन अ डेट, तो उसका माइंड सेट ऐसा है कि शाम की डेट अगर हो तो शी वॉन्ट्स टू हुक अप, अगर उसको कॉफ़ी डेट हो तो इट्स अ कैजुअल डेट एंड दैट्स दैट. लंच डेट हो तो मे बी शायद थोड़ा बहुत सीरियस होगा मैटर. So she went out, she wanted to hook up, she went out with this brother because she wanted to hook up, and this brother took her home. I think the brother was too drunk, he passed out. And then later she meets the brothers, she meets the hero, the MMC, okay, in the same house as the brother. भाई मेरे को तो इतने डाउट आ जाए कि भाई अनबिलीवेबल कि भाई इन द फर्स्ट प्लेस ये बंदी को उसके भाई के साथ करना था चक्कर, पर उसको गलती से उसको ये मिल गया हीरो MMC इन द फर्स्ट. मेरे तो एज अ हीरो मेरे तो दिमाग में वही बस जाएगा, ये बंदी को तो मेरे भाई के साथ सोना था, मेरे को क्यों लाए, मेरे तो दिमाग में ये बैठ जाए इन द फर्स्ट प्लेस. लाइक व्हाट द फक, अब क्यों ज़बरदस्ती करना है मेरे साथ. लाइक नहीं, I don't think so. Like, it was just so hard to swallow to know that. Anyways, again, I think a lot of people like it because it is snackable. You can just chew it and forget about it. Not challenging at all. It is designed like an Instagram reel, Twitter thread, first date banters. There wasn't even any banter, okay?
You don't have to sit with discomfort or introspection. You just nod, you laugh, and you move on. That's what the book was about. I think people like this book also because it validates people exactly where they are in their own lives. Like a lot of viewers are like dating emotionally unavailable people, like Ananya was, avoiding hard conversations, like Ananya was, stuck in cycles they don't want to examine, like Ananya was. The book says this is normal, you're fine, everyone's like this. लिटरली ये डिक्लेयर हो चुका है कि भाई बुक का ऐसा बोलना है एंड इट्स जस्ट दैट्स दैट. वन टाइम वॉच, वन टाइम रीड, यू वॉन्ट टू थ्रो इट अवे. लाइक कुछ तो लाइक everything is comforting, but growth is not comforting. Like I was just frustrated by the end of the book. That's all.